Hello students, how are you? I hope all of you are good. I'm also fine student. I'm your computer teacher, Prashant Jaswal. Now, I'm here to discuss the topic of computer. This is your first chapter. Chapter name is Computer Language. What is language, student? Do you know about language? What is language? Anybody know about language? Always we are speaking, we are telling something to other person, but the question is, what is language? Language किसे कहते हैं? Let's tell you about language. A way which express your feeling to other person known as language. Am I right, student? A way which help to your expression to other person known as language. लैंग्वेज एक प्रकार का तरीका होता है जिससे हम अपनी बातों को दूसरे से कह सकते हैं. ओके, दिस इज नोन एज लैंग्वेज. इन कंप्यूटर there's four type of language. Okay, let's tell you about language. There's four type of computer language, which are machine level language, assembly level language, high level language, and fourth generation of language. Do you know about this? What is the assembly language? What is machine level language? What is high level language? And what is fourth generation of language? Let's tell you about machine level language. Language, as our language, we are speaking Hindi, English, Telugu, Malayalam, etc. language, right? But do you know, student, the computer never understand your language like Hindi, English. Computer, as we know, computer is a type of machine. So, dear student, computer can understand only machine level language. Okay, machine level language is the computer language. Also, we can say that machine level language is a low level language, a type of language which directly understand by your machine. And as we know, your computer is also type of machine. So this language is known as machine level language. And do you know, student, in machine level language is only two digits, which are 0 and 1. Okay, 0 means off and 1 means on. आपको पता है स्टूडेंट, जो लैंग्वेज होता है मीन्स मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज में केवल दो डिजिट होती है, 0 एंड 1. 0 मीन्स होता है कि जब ये डिजिट किसी कंप्यूटर के किसी भी कंपोनेंट्स में जाएगा तो वहां के सारे पार्ट्स ऑफ हो जाएंगे. ओके, all the parts switch off that time when digit 0 goes inside the computer. Okay, when digit 1 inputted by user inside the computer, then all the computers get activated that time. जब डिजिट 1 जाता है किसी भी प्लेस में या फिर किसी भी कंपोनेंट्स में डिजिट 1 जाता है, वहां के सारे पार्ट्स ऑन हो जाते हैं. So let's discuss or take an example. हम लोग ने लाइटिंग को देखा होगा. Always we are using lighting. Suppose we are take example of LED bulb, fan, etc. Switch, always which we are using for on and off your devices, your bulb and fan. Okay, when
we on the our switch, that time your components means your bulb and fan is on. That time the digit 1 going in your bulb and fan. ओके, उस समय आप देख रहे होंगे कि ये जो डिजिट 1 है वो आपके बल्ब और फैंस में जा रहा होता है, इसलिए ये ऑन हो जाता है। ओके, व्हेन जब हम लोग अपने डिवाइस को यानी कि अपने स्विच को ऑफ करते हैं, ठीक है, व्हेन ऑफ आवर स्विच देन योर फैन और लाइट इज ऑफ। जब हम लोग अपने स्विच को ऑफ कर देते हैं तो लाइट एंड फैन ऑफ हो जाती है। क्यों? जबकि लाइट इलेक्ट्रिक अब भी आपके घरों में होती है। तो दिस इज द वर्क स्विच। आपके स्विच का काम होता है कि ये आपके लाइट को कट करता है और आपके लाइट को वापस लाता है। जब किसी भी कंपोनेंट्स में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डिजिट 0 जाती है, that time that device get activated and when any when जब किसी भी डिवाइस में आपका डिजिट 1 जाता है, डिजिट 0 जाता है, that time that electronic device get deactivated और